आंटी। नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्कार मैम। नमस्ते सबको। नमस्ते। अरण्य विहार ट्रस्ट की ओर से सभी का स्वागत है। आज आदरणीय लुंगपोर चाह की पुण्यतिथि है, 34th पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम साथ मिले हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इवनिंग चैंटिंग करते हैं, तब तक और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। निखिल जी, ओवर टू यू। Thank you. सायंकालीन वंदना, अर्पणा एवं प्रारंभिक वंदना। योऽसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाखातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घं इमे हि सकारे हि यथार्हम् आरोपिते हि अभिपूजयाम साधुनो भन्ते भगवा शुचिर्परिनिपुतोऽपि पश्चिमाजनतानुकम्पमानसा इमे सकारे दुःखतृपन्नाकारभूते पटिगणहातु अंहाकं विघरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि हन्दमयं बुद्धस्य भगवतो पुबभागनमकारं करोमस्ये नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध संग गुणों का पाठ पाली भाषा में। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विज्जाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषिदं सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको अच्युतं वेदितव्यो विन्युहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति। Over to you, Dipti जी। धन्यवाद निखिल जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम आदरणीय अजान चाह की 34th पुण्यतिथि को साथ मिलकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। यदि वो जीवित होते तो 105 वर्ष के होते। और भगवान की शिक्षा, जैसे हम जानते हैं, हालांकि त्रिपिटक में है, पर उसे वास्तव में उसके जीवंत उदाहरण जो हैं और जो उसे अपनी प्रैक्टिस पर उतार पाते हैं और फिर उसे दूसरों को ट्रांसमिट कर पाते हैं, ऐसे लोगों की वजह से ये लीनियज बनी हुई है। ये संघ का एक उज्जवल उदाहरण वेनरेबल अजान चाह। तो सबसे पहले हम उनकी जीवनी स्टिलनेस फ्लोइंग में से कुछ एक्सर्प्ट्स, कुछ की पॉइंट्स, कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स सुनेंगे दीपक जी से। दीपक जी ने स्टिलनेस फ्लोइंग की पूरी जो बुक थी उसका धीरे धीरे रीडिंग करी थी और डिस्कशंस हुए थे कुछ समय पहले एवीटी के प्रोग्राम में। तो ओवर टू यू दीपक जी फॉर गिविंग अस सम स्निपेट्स फ्रॉम अजान चा's life. Thank you. Am I audible? Thank you. तो ये जो बुक हम रीड करेंगे, बुक का नाम जैसे हमने अभी सुना, स्टिलनेस फ्लोइंग, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ अजान चाह। ये अजान चाह की फोटो है जो बुक के बिगनिंग में आती है। बुक के कई सेक्शंस में भी अलग अलग चैप्टर्स की बिगनिंग में भी फोटोज हैं, कुछ कुछ मॉन्क्स की और अजान चाह की। और ये एज ए बुक जो है वो लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ अजान चाह, जो कि अजान जैसारो ने लिखी है। ये बुक में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 850 पेजेस हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये बुक कितनी बड़ी है। एंड इस बुक में से यू कैन से ऑलमोस्ट रैंडमली मैं कुछ पर्टिकुलर स्मॉल स्मॉल सेक्शंस को पकड़ के उनकी कुछ पैराग्राफ्स की रीडिंग करूंगा। एंड सो टिपिकली देयर विल नॉट बी ऑर्डर के, इन सेक्शंस में कोई ऑर्डर नहीं होगा, बट हर पैराग्राफ के बाद हम एक छोटा सा 10 सेकेंड 20 सेकेंड का पॉज लेके रुक सकते हैं। देन वी कैन
डिस्कस इफ किसी का भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है. आप Okay. इसे जूम करेंगे तो हेल्पफुल रहेगा. Yeah, I'll be zooming in. Yeah. So screen is visible, right? यस. तो स्टार्ट करते हैं. सो आई थिंक बुक की शुरुआत भी जान जैसा रो उनके डेथ के टाइम से करते हैं, उनके इवेंट्स लीडिंग टू इट्स डेथ, एंड उसके बाद इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ एंड द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ थाईलैंड एट दैट टाइम. सो पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. As it transpired, the last days of Luangpur's life came to exceed 3000. इट वाज सो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है 3000 का, आई थिंक लास्ट के काफी साल पर बेडिडन थे, और वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे, तो इट एंड ही उनको कॉन्स्टेंटली नर्सिंग और केयर की जरूरत थी. तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है. एज इट ट्रांसपायर्ड द लास्ट डेज ऑफ लॉन्गपुर लाइफ केम टू एक्सीड 3000. It was not until 5:20 a.m. on the 16th January 1992 that he finally passed away. By that time, he had survived a succession of medical crises that it had seemed to many of his disciples that he could leave them at any moment, and that somehow he never would. There was a hope and expectation that before he left the world, he would perform some kind of psychic marvel, but he did not. At last, when his kidneys and his heart could no longer function, he went into the gentle good night. So I think इस छोटे से पैराग्राफ से एटलीस्ट मैं एक ये पॉइंट भी ले सकता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट के लुआंगपुर की ग्रेटनेस को आप कई बार हम फिजिकल चीजों में नापने की कोशिश करते हैं कि इफ द पर्सन हैज अचीव a lot in his meditation, then we'll expect कि वो कुछ मिरेकल दिखा देंगे, या इस डेथ विल बी मोर कैरिज्मेटिक, जो कि बहुत इंस्पायर करेगी. बट एट एंड ऑफ द डे वी ऑल नो कि वी हैव टू गो थ्रू दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड ये कहना मुश्किल होगा कि किसको किस सफरिंग से गुजरना पड़ेगा. तो जो इंसान के पास्ट कर्माज हैं वो आएंगे और अपना फल देंगे, बट यू शुड नॉट कंपेयर दैट with the greatness of a person. Similarly, so I think just right. So I think the story shifts to a particular time when Longpur Ajahn Chah was still in his early years of training, and he used to visit many monks. और उस समय के जो मास्टर्स थे वो उनके पास जाते थे और उनसे टीचिंग्स लेते थे. तो एक पर्टिकुलर जी मास्टर के पास गए थे जिनका नाम लुंगपुर की नारी था. उन्होंने अजान चाक को मॉन्क्स की रोग को सीने के लिए बोला. तो ये उसके अंदर क्या लुंगपुर की टीचिंग है, क्या लर्निंग है, उसकी बात निकल के आती है. लुंगपुर किनारे asked me to see you a set of robes. I went at it flat out. I wanted to get it over and done with quickly. I thought once the task was done, I'd be free of business and be able to get down to some meditation. One day, Lungpu walked over. I was seeing out in the sun, totally unaware of the heat. I just wanted to get finished so that I could devote myself to meditation. He asked me, what was that hurry? I told him that I wanted to get finished. When he asked me why, I told him that I wanted to practice meditation. Then he asked me what I would do after I'd finished meditating. When I told him, he asked me what I would do after that.
I realized that there would be no end to this line of questioning. Then he said, "Don't you realize that it's just this swing that is your meditation? Where are you rushing off to? You have really gone. You have already gone wrong. Craving is flooding your head, and you have no idea that it's happening." So essentially, कई बार हम अपने लिए ये टास्क ले लेते हैं कि हमें लगता है कि बस ये काम मैं ख़त्म कर लूँ, इसके बाद मैं मेडिटेशन करूँगा या इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, इसके बाद मैं कुछ ऐसा करूँगा जो मुझे करना है, और ये काम तो बस जस्ट करना है, मैं करने के लिए कर रहा हूँ। और उसके अंदर देन वी आर नॉट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, एंड वी आर नॉट केयरफुल ऑफ व्हाट्स गोइंग इन आवर माइंड। तो आई थिंक एक तरह का ये लर्निंग है हमारे लिए कि ये जो चेन है कि ऐसा नहीं है कि एक काम खत्म हो जाएगा उसके बाद रियली आप फ्री हो जाओगे। तो वट एवर जो भी हम कर रहे हैं उसके अंदर हमें टू बी प्रेजेंट इन दैट इज what is required. And the shaft of light. I had been sure I was making merit. I thought merely doing the job was good enough. I'd get it done quickly and go on to something else. But Luanko pointed out my mistake. What was the hurry? So I think that's the thing. For example, अगर हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नॉर्मल डे टू के काम भी कर रहे हैं तो वी कैन बी माइंडफुल इन दैट एंड वी कैन बी अटेंटिव कि हम किस तरह से उस काम के अंदर क्रेविंग और जो हीडलेसनेस है उसको अ, आने से रोक पाए। सो अगर कभी किसी को लगे प्लीज इंटरप्ट मी एट एंड ऑफ द पैराग्राफ, वी कैन ऑलवेज डिस्कस। सो यहाँ पे थोड़ा सा और अजान चाह की हिस्ट्री आती है कि व्हाट वाज हिज लाइफ। From 1954 onwards, Lumpur Cha was focused on his monastery, training the steadily growing number of monks, novices, and nuns who were resident there, teaching it lay supporters. By the late 1970s, he had become one of the most favored monks in Thailand. After traveling to England in 1997, however, Lumpur's health started to decline in 1983. Paralyzed and unable to express himself coherently, he stopped speaking. And so that's the period, but which I was talking about between 1983 till 1992. In January 1992, after over 9 years of stillness and silence, Luangpo's life came to an end. The year when the Luangpur was in his prime do not lend themselves to a chronological narrative, as there was relatively little external incident to relate. Monastic life is intentional, repetitive. Luangpo rarely traveled except to branch monasteries as a celebrate forest monk. His personal life was without drama. He did not marry, fathered no children, had no love affairs. He neither made a single penny nor lost one, and accumulated no more possessions than he would have been able to carry over his shoulder in a cloth bag. For 25 years, Longpur's life, at least that which has left a record, is primarily the story of the teaching that he gave and the training that he developed. So I think broadly the message which I comes is that that's a kind of probably dedication or service Lumpur had, that most of his life uh, after setting the monastery in 1954 till the time in 1983, it was a life of training the monks and uh, giving the teachings to the novices, the monks, and to the lay people.
So here is also a small incidence on the kind of dedication Ajahn Chah had towards his practice. So once I think Ajahn Chah had a उनको एक बार रिक्वेस्ट आई थी टू किंग के रॉयल पैलेस में जाके मिल्स ऑफरिंग की. So on one occasion, Longpur was included in a group of monks invited to an offering of alms in the royal palace in the Bangkok. He arrived at the same time as certain senior monks who looked scornfully at Longpur's alms bowl. Cha, don't you feel embarrassed about eating out of your bowl in front of the king? Luangpo replied, don't you feel embarrassed about not eating out of your bowl in front of the Buddha? So essentially, like the message which Luangpo gave was his dedication to teaching and unwavering faith in following the Buddha's teaching and all the practices. And it even didn't matter to him कि वो किंग के सामने है कि कहाँ है. And sometimes I think इस particular section में अजान शाह के बारे में लुपुर सुमेधो जो बताते हैं कि किस तरीके से वो maybe we can first read and then we'll talk. Occasionally, as an Ajahn Sumedho would remark as if Luangpur withdrew from his personality altogether. Sometimes I'd look at him and there was just no one there. The look he had of total emptiness was quite moving because you realize that the personality was something he used as a compassionate tool. So I think इस बुक में बहुत बार ऐसा आता है कि अजान शाह हमेशा जो टीचिंग्स थी वो सामने वाला बंदा किस भाव से सवाल पूछ रहा है और क्या सवाल पूछ रहा है और उसके लिए अ, किस तरह का राइट आंसर अप्रोप्रिएट होगा अ, उस हिसाब से वो आंसर देते थे. तो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सेक्शन से ये लगता है कि अ, मतलब प्रॉब्ली he was really a great achievements in his meditation, just but he had this so much compassion that uh, he used his compassion towards it, helping others. Sitting under his kuti receiving guest, Luangpur would flow between quite different modes at a situation. On any given day, he might just finish comforting a bereaved father in a homely love, then switch to the central Thai to explain some point to doctrine with Bangkok academics and go to admonish a monk for a sloppy job of repair work on the kuti. Then he would go on throughout, and this would go on throughout the day. It was not the multitasking familiar to business executive. He was fully present in every moment, giving no sign of mental stress in moving from one mode to another mode and no emotional runover. तो मतलब हर मोमेंट पे फुली प्रेजेंट रहना और उस मोमेंट के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है वो लेना एंड देन क्विकली जंप टू द नेक्स्ट सिचुएशन एंड देन फुली प्रेजेंट इन दैट सिचुएशन. प्रॉब्ली शायद ये इस तरह का जो ये कर पाना इट्स आफ्टर दिस लॉन्ग हार्ड प्रैक्टिस जो अजान शाह ने करी. और जैसे कि इसमें कह रहे हैं कि एक मोमेंट पे वो जिसके किसी के बच्चे की डेथ हो गई है उसके फादर को कंफर्ट दे रहे हैं, फिर सेंट्रल थाई डायलेक्ट में किसी को टेक्निकल पॉइंट समझा रहे हैं और उसके अगले मोमेंट में कोई मॉन्क ने अगर गलत काम करा है तो उसको डांट रहे हैं. तो इट वाज लाइक मल्टीटास्किंग बट नो साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस और कहीं पे कुछ इमोशन नहीं है. एंड इसी में ही आगे बात आती है. When telling a favorite story, he would chuckle as if he got
funny parts as if it were the first time he had told it. At such time, there was no trace of vanity or bombast of great man with a captive audience, nor the slightest acknowledgement that many of its audiences knew the story. But it was a stronger teaching about being in the moment that any amount of theoretical instruction could impart. Ajahn Chon was one of the monks who marveled at such sessions. और इसी में ही एक छोटा इंस्टेंस आता है. One evening, Lungpur was sitting on a wicket seat underneath his scooty talking to a small group of monks about the old days. And as I was in my favorite position, massaging his feet, his manner was so warm and inspiring that I felt utterly content. I could have sat there the whole night without complaint. Then a torch beam moved through the forest towards us. It was Venerable Dito. He was quite senior monk who had transgressed a serious Vinaya training rule, Sang Disesa, and was undergoing Manata, the prescribed purificationary practice. Venerable Dito has brought some Longpur's freshly washed robes to put away. Without any stiffening of the body, Luangpur suddenly barked at him in the harshest possible way. The contrast with the atmosphere in our small group made the hair on my back stand on the end. At that moment, Luangpur was utterly ferocious. Venerable Rito quickly did what he had to do, bowed and left. Then Luangpur continued our conversation as if nothing had happened. So think about the scenario. There are कुछ monks जो हैं वो अजान चा के पास बैठे हुए हैं. एक कोई monk अजान चा के पाँव की मॉलिश कर रहा है और काफी पूरे एटमॉस्फेयर में वार्मथ है. अ, अजान चा जो है काफी अच्छे से बाकी monks के साथ लाइट हार्टेड बातें कर रहे हैं और सडनली एक monk आता है और बिना अपनी बॉडी को स्टिफ करे, बिना अपने अंदर कुछ स्ट्रेस डाले, एक ऐसे जोर से कड़क आवाज निकाल के अजानचा और उस मॉन्क को डांटते हैं और देन अजानचा वापस से उस अ, जो बाकी मॉन्क्स हैं उनसे बात करने लगते हैं. He made no comment about vulnerable Rito and didn't refer to what has just happened at all. It was as if it has never happened. I suddenly felt very heedless. The intimacy I felt holding his foot in my hand and enjoying the moment of conversation made me forget that there was someone who dwelt somewhere far beyond my scope and comprehension. I felt a strong compulsion to be mindful and alert. I realized that I could take nothing for granted. तो उस समय जो पर्टिकुलर मॉन्क का जानचा के पाँव दबा रहे थे तो उनको रियलाइज हुआ कि ये जो जिनको एज लोंगपुर जानता है वो अ, मतलब उनकी जो ग्रेटनेस है उनको शायद समझना उसके बस के बियॉन्ड है. ही शुड the teaching is that he should always remain mindful and alert. So this is like kind of uh, practice the teachings which monks used to get uh, beyond the formal sitting trainings. Another monk spoke of Luangpa. Another monk spoke of Luangpa being a mirror in which you can always, which always saw yourself. His ability to reflect people' attention back on their own defilements was not due to him adopting an even emotional tone. Rather, it was consistent lack of self in whatever mode he was expressing. And so his disciple loved him and feared him in an inexplicable, visceral way. So I think that was a mixture of uh, both. कि यू फाउंड जो भी मॉन्क्स है उस समय जो भी उनके डिसाइपल्स थे वो अजानजा को काफी पसंद भी करते थे. एंड देन देयर वाज अ सेकंड थिंग वाज दैट कि देयर वाज ऑलवेज ए फियर ऑफ हिम एंड इज द एबिलिटी के जब आप अजानचा के पास अपनी कुछ प्रॉब्लम लेके जाते हो या कुछ प्रॉब्लम लेके जाते हो मेडिटेशन रिलेटेड कुछ भी एंड देन ही अलाउज यू टू रिफ्लेक्ट दैट इन योर ओन थिंकिंग और उसमें कैसे करेक्शन कर पाए.
That was a message people used to get जो अजान चा से डिस्कस करते थे कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो rather than डायरेक्ट आंसर देने की बजाय allowing people to reflect back on what they're saying or what is a problem. And then Ajahn ke there always used to be a simple ways जिसमें कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते थे जैसे कि on one occasion a younger man newly conscripted in the army asked Luangpur for a Buddha medallion to wear around his neck as a protection against bullets. He was following in an old tradition. Monks have been known to provide empowered amulets to the soldiers for hundreds of years. Luangpur has always refused to do so. Before explaining why, he pointed to the life-size brass Buddha statue on the shrine. Take that one if you like. Carry it in front of you, and no bullets will get you for sure. So again, that was his way of reflecting back on the superstition of लोगों का जो superstition होता था कि how can people come out of those things. And then I think it's also about his determination. Ajahn Chah की determination थी कि once he decided that uh, something is wrong and this needs to be corrected, and once the decision has been made, it has been made. It cannot be कि वो अब वो decision किसी के कहने पे बदल सकता है. An example of Lung's determination to do things as he saw fit, irrespective of the wishes of lay supporter, may be seen in the form of an account given by Tas Soi, who had left a rather colorful life as a layman until Luangpur took him under his wing. On a number of occasions, Luangpur took Tao Sai as his attendant on walking expeditions. During a trip to central Thailand, he accepted the invitation of a devotee couple to rest up at their house situated on the coast outside बैंकॉक के लोंगपुर ने सेंट्रल थाईलैंड पे जब एक विजिट कर रहे थे तो एक इनविटेशन एक्सेप्ट करा कि किसी ले सपोर्टर के घर का जो एकदम कोस्ट पे था सी की कोस्ट पे था वहाँ पे रहने के लिए it was a lovely place. I could have stayed there for ages, but after 3 nights, Luangpur tell me to pack his things and arrange some transport. It's time to leave. I am a bit disgruntled. I say, wouldn't it be better to tell the owner of the house first? He said, no. If we do that, they won't let us leave. We didn't make any promise about how long we are going to stay. We can't let them tie us in obligations. Well, anyway, the caretaker must see something's up and phone his boss in the Bangkok. Nuangpur tells the taxi driver to take us to Aranya Pratek out on the Cambodian border. We were the only about 10 kilometers down the road when the lady of the house comes racing us behind us in her car, overtakes us and blocks off the road. She jumps down and she, uh, the, uh, she jumps down out of the vehicle, rushes over and bows him to the right there in the middle of the road, sobbing and crying. Oh, Lungpur, you can't leave yet. You have only just arrived. I've hardly had any time to speak with you, and you are abandoning uh, your daughter already. Within moments, her husband arrived in his car, and so there was a second vehicle blocking the road. But they beg, they can beg and plead all day and night. Longpur's not going to change his mind. All he'll say it was wait till the next time. Then the man starts to cry as well. The woman asks the taxi driver how much he's charging, and he says 40 baht, 400 baht. She pulls the money out of her handbag and puts it on the dashboard. Luangpur just sits there impassive. He tells the driver to start the engine. And so the last we see of the two of them,
They are squatting down by the side on the road and their hands in Anjali looking totally dejected. Much later, paying respect to Longpur in the Bangkok, the couple could laugh at the whole affair. So overall, I think broadly, maybe Luangpur felt that probably the place was too nice, जगह बहुत सुंदर थी uh, या उनको ऐसी बाइंडिंग लगी कि मे बी जो ओनर से वो ज्यादा कंपल्शन आएगा लुंगपुर के ऊपर, तो उन्होंने जस्ट वंस ही मेड द डिसीजन कि उनको जाना है तो जाना है. इट वाज काइंड ऑफ अनशेकेबल. एंड देन जंपिंग टू अनदर सेक्शन, यहाँ पे लुंगपुर कहते हैं कि धम्मा को हमें किस तरीके से, जब भी हम धम्मा टॉक सुनते हैं तो हमारा क्या एटीट्यूड रहना चाहिए उसको सुनने के लिए. He said, listening the Dhamma talks requires a special attitude. Keep listening. Don't just believe what you hear and don't disbelieve. Make yourself neutral. Keep listening. It will bring good results. There is no danger in it. The peril lies in believing too much in what you hear or disbelieving. Listen and contemplate. This is what the practice is about, being a listener and being one who reflects on things. As you don't know yet whether the things you like and dislike are true or not, Buddha said that for time being, should keep listening. If you don't, you'll just follow your opinions about the things, and if you do that, then you will develop a wrong view and your practice won't advance. The wise person is the one who keeps looking, contemplating, continually reflecting. So I think the broad message which I get is that uh, when we are listening, probably listen from a neutral position. Don't try to attach towards too much towards what you are listening, whether you're bringing opinions in your अपने मन में ओपिनियन बनाने की कोशिश ना करें कि ये सही है कि ये गलत है, ये सामने वाला बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है. इट इज मोर लाइक यू in neutral way you listen and then you let it follow it up with contemplation or reflection. And the next particular part, the true Dhamma is not something that can be communicated with words. You can't appropriate someone else's knowledge. If you take someone else's knowledge, then you have to meditate on it. Listening to someone else and understanding what they say don't doesn't mean that your defilements will come to an end. You have to take that understanding, chew on it, and digest it until you are sure and sure thing and really your own. So I think meditation experiences और meditation teachers के साथ हमेशा यही होता है कि whenever we listen to their teaching, कभी भी किसी monk की या कोई हम teaching सुनते हैं तो हमें ये समझना है कि वो teachings जो है वो उनके अपने experiences से आ रही हैं जो उन्होंने अपनी life में अपनी meditation में realize करी हैं. And so it's ऐसा नहीं है कि we have to just follow दैट कि जो सामने से टीचिंग्स आ रही हैं करेक्ट है और उनको बिलीव करना है. इट्स अगेन मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हम उनको किस तरह से समझ पाएं और उसको अपने अंदर इंटरनलाइज कर पाएं, डाइजेस्ट कर पाएं और एंड तब उसका रियल फायदा आगे निकल के आएगा. तो यहाँ पे आई थिंक एक और सिंपली के थ्रू अजान चाह एग्जांपल दे रहे हैं कि किस तरीके से जो फॉर्म साउंड्स ऑर्डर हैं उनको एक सी 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 शोर के एग्जांपल से और वेव के एग्जांपल से समझा रहे हैं.
Visible form, sound, odor, taste, physical sensations, and thoughts constantly impinge upon the mind, encouraging like, dislike, attachment. Luangpur explained how the stabilized mind, turning its attention to three characteristics of existence, is unwavering in the face of सेंस कॉन्टैक्ट. तो भी ये 5 सेंस कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, फॉर्म, साउंड, ओडोर, टेस्ट और फिजिकल सेंसेशन. उनको किस तरीके से हम मन को स्टेबलाइज करके जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे समझ सकते हैं. ही सेड that impermanence, unsatisfactoriness, and non-self are like a seashore, and the sense objects surging on it are in the mind are like waves. कि जो भी सेंस ऑब्जेक्ट हैं वो एक समुद्र की वेव की तरह सी शोर पे आते हैं, और जो सी शोर है वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इम्परमानेंस, अनिश्चित दुख, अनात्म से कंपेयर करा गया है. It's like waves breaking on the shore. After a wave hits the shore, it breaks up and a new one appears in its place. Waves can reach no further than the shore. In the same way, sense objects can go no further than our sense of knowing, meeting the perception of impermanence, unsatisfactoriness, and non-self. They split apart and disappear. कि किस तरीके से जो भी ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जब हम उनको सही परसेप्शन से देखते हैं, अनिश्चित दुख अनात्म के परसेप्शन से देखते हैं, तो वो सेंस जो ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उनकी ताकत है वो वहीं पे खत्म हो जाती है, और वो उससे ज्यादा हमको नहीं पकड़ सकते. तो यहाँ पे उनकी और टीचिंग की बात आ रही है. तो अगेन जैसे मैंने किसी बोला कि अजानचा हर किसी को अ, इस तरह से आंसर दे देते कि सामने वाले बंदे को अपने डाउट्स दिखें और उनसे निकलने का रास्ता मिले. एंड समटाइम जैसे कि परिचय समुत्पाद की बात आ रही है, तो उसमें क्या कोर एसेंस है और क्या समझना है और कहाँ पे हमें स्टक नहीं होना है, उसकी बात कर रहे हैं. He wouldn't be bothered by questions no matter how long and involved they might be. He wouldn't interpret or classify issues like other people. He just cut the problem off and throw them away. He'd cut them into little bits and that would be end of them. Sometimes all he needed was a single word or a counter question. Some people like to go and listen when others were asking questions, but they were disappointed if they thought they were going to hear conventional answers. It wasn't so much that he gave a practical advice on how to solve the problem. It was more he showed people how to correct their thinking and attitude. कि वो लोगों को मदद करते थे कि किस तरीके से जो उनकी थिंकिंग है, ये एटीट्यूड है, उसको कैसे देख पाए, और लोग अपने उस एटीट्यूड और थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम है उसको देख पाए और उसको कैसे लोग खुद करेक्ट कर पाए. When people came to him with doubt, they'd hear a monk say uh, this, and was it right or so on. He would say that be aware of your lack of understanding on the matter, and your desire to get an answer to it was a more valuable than just adopting opinions of another person. That's the way he would answer the question. His answers were immediate and spontaneous, but they would always be spot on. Someone once asked about पचीसे समुत्पाद. तो अगर आप मान लेते हैं कि जैसे भगवान की ट्रेनिंग है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की, अगर आप मेडिटेशन में इतना भी आगे नहीं बढ़े हैं कि यू हैव गुड समाधि, और वो समाधि डीप समाधि में जाके आपने इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं करा है, एंड यू जस्ट वांट टू खाली थ्योरेटिकल वे में अगर आप डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को समझना चाहते हैं, तो देन देयर इज ए चांस यू कैन गेट स्टक. तो अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझें, someone asked him about Pachiche Samutpad, the teaching of dependent origination.
Instead of answering in the usual way by going through all the different links, he asked the questioner whether he had ever fallen out of a tree. You lose your handhold, he said, and the next moment you are lying on the ground in the pain. You don't know what went on your mind and as you fell. Didn't have any mindfulness. It was all too quick. All you know is that you are suffering now because you had fell out of a tree. The reason that you are suffering is like this. Now is called the specific conditionality. When he finished, the person who was asked him was laughing with pleasure in his explanation. And similarly, एक और example आता है कि one meditator was asking about uh, the problem he was facing in his meditation. On one occasion, a diligent meditator asked him about her practice. Sometimes my mind becomes very concentrated, but there tends to be moments when suddenly my head bobs ups and down. It's like I'm nodding, but I'm aware there's mindfulness there. What it is called? It's called hitting the air pocket. When you go up in the plane, that's what happens. कि किस तरीके से उस छोटे से आंसर से सामने वाले पर्सन को उन्होंने मदद करी. अगेन अजानचा जैसे कि इसमें आ रहा है कि मतलब वो इस तरह से मतलब उनके आंसर इस तरह से जनरली होते थे कि ही विल नेवर एनकरेज स्पून फीडिंग बट ही विल एनकरेज कि किस तरीके से लोग अपना आंसर रिफ्लेक्ट कर पाए. एंड यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन आया है सेल्फ को लेके. द शार्पनेस ऑफ हिज विट वाज वेल डेमोन्स्ट्रेटेड विद ए visit of certain Christian missionary who held the Buddhist teaching of non-self to be untenable. He was of view that the knowledge of non-self presupposes a knower, and that the knower must be self. The question he asked Luangpur, who knows non-self? Luangpur's immediate counter question was, who knows self? So I think, depending on the context, like he could turn the question around और उसको uh, uh, सामने वाले बंदे को if it is right he can like counter question without getting caught in the philosophical wrangling. Luangpur was asserting that if the knowledge of non-self requires that is not without getting caught in the philosophical wranglings. Luangpur was asserting that if knowledge of non-self requires something that is not non-self, that is self as a knower, then the opposite must also hold true. The knowledge of self proposes something that is not self as its knower. If the proponent of the self view objects that the self knows itself, then the Buddhist may add that by the same token, knowing may be considered a naturally arising property of non self mind. Luangpur's three word counter question avoided the need of such a convoluted explanation. The most important point of Luangpur was that without a mind honed through a meditation practice, there can be no resolution of the issue of self and non-self, only beliefs and speculations. Unless you are uh, uh, thorough in your meditation practice, asking these questions, uh, self or non-self, again, it's only about beliefs and speculations. Just let me, I'm skipping the. Maybe Deepak, one more section and then we can pause and maybe Yeah, Deepti can facilitate something, and yeah, then if there aren't many questions, we can continue. yeah. So I think in terms of
about mindfulness. Uh, uh, so this is, I think, very practical advice जो कि हम अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं कि so this is what I think Ajahn Chah ने लुंगपुर मुन से समझा था. Whatever comes up that you are unsure about, stop. If there is no alertness in your mind, then don't do it. Don't say it. For instance, you wonder if there is an offense or not. As long as you still don't know whether it is or not, then don't act upon that intention. Don't speak with it. Don't transgress. So I think इसका जो कॉन्टेक्स्ट अभी आता है कि विनायक के अंदर देर आर वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ रूल्स जो एक मॉन्क को फॉलो करने होते हैं. देयर कैन बी समटाइम्स अ सिचुएशन के यू कैन गेट कंफ्यूज के व्हाट डज द विनायक से अबाउट ए present situation, whether it's a whether I'm committing a small offense, whether even a minor offense or not. Then that's advice which Lumpur gives, that के अगर आपको लग रहा है कि कहीं आप गलती ना कर रहे हो, then it's better to be stopped and have the alertness, and from that alertness maybe you can decide later whether you should do it or not. And I think it's all advice for all of us, that how can we be mindful in our day-to-day life. Sometimes there can be situations where we something कुछ भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी unpleasant होता है, and so we can always pause and wait and see okay, are we making a mistake or not. And if we pause and we let the mindfulness come to the fore, and then that mindfulness can guide us towards the right decision. So time is 7:50, so probably I'll pause here if there are any questions. थैंक यू दीपक जी. अजान चाह की लाइफ की आपने काफी सारे प्रसंग कवर किए, उनकी टीचिंग्स भी कवर की, एंड इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू टॉक अबाउट दैट ग्रेट पर्सनालिटी इन जस्ट 30 minutes. So you've done a tremendous job in finding some very interesting sections from the 800-page book. So friends, अगर किसी को कोई सवाल है या कोई बात जो इन्होंने पढ़ी या वैसे ही आप अजान चाह के बारे में आपने सुनी है, जानते हैं, और इफ यू वांट टू शेयर समथिंग व्हिच रियली कम्स अप फॉर यू, वो ये भी हो सकता है, इस बात का उत्तर हो सकता है कि हु इज योर अजान चाह, एज इन आप अजान चाह को कैसे समझते हैं. फोरम इज ओपन. सर वो जो स्पेसिफिक कंडीशनैलिटी वाली बात की थी, वो क्या उसको ऐसे समझे कि पेड़ से गिरे और सडनली आप नीचे पेन महसूस हो रहा है और बीच में आप माइंडफुल नहीं है, तो इट वाज लाइक स्लिप ऑफ दोज स्टेट्स की कब उपादान बन गया, कब भव बन गया, कब तृष्णा बन गई, एंड सडनली हम लास्ट वाले स्टेज पे चले गए. इज इट लाइक दैट? वो स्पेसिफिक कंडीशनैलिटी का क्या मतलब था? I think मुझे वो स्पेसिफिक कंडीशनैलिटी का मतलब तो शायद मैं नहीं बता सकता, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि कई बार we only want to understand things from technical point of view, reading point of view, without trying to go through the teachings and experiencing in your meditation.
So that sometimes can be a trap. So sometimes to be able to see teachings in their practical aspect also helps. It's not that we have कि हमें पटिजा समुत्पाद के सारे लिंक्स को समझना है कि उनके लिंक्स को using them in our meditation to do a reflection is much more wiser than just trying to read them and not able to follow the Buddha's teaching. Just comparison के sense में मैं the way I understand इनमें से कई चीज़ें वो ये है कि एक महान टीचर की ये हॉलमार्क है कि उसके सामने जो व्यक्ति है या जो ग्रुप है उसके अनुकूल वो बताते हैं। सो ये संभव है कि वो जो स्थिति है उसमें it was more appropriate for that person to understand the big picture। मैंने ये सीखा एक्चुअली जितना समय मैं उनकी मोनेस्ट्री रहा या जो उनके इमीडिएट डिसाइपल्स अब भी कुछ लोग ऐसे जीवित हैं, including Lumpur Liam, with whom I had the good fortune of spending some time, कि वो जो एक स्थिति में बता रहे हैं उसको हम जनरलाइज ना करें। दैट इज ऑफन अ कैपिटल मिस्टेक दैट वी एंड अप मेकिंग। सो फॉर इंस्टेंस इस ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल है, अगर हम इससे ये कंक्लूजन निकाल लेंगे कि भाई हमें डिपेंडेंट ओरिजिनेशन समझने की जरूरत ही नहीं है, सो देन वीड बी बेसिकली गोइंग अगेंस्ट द बुद्धा's टीचिंग। सो ये सारी कहानियाँ बेसिकली एक तरीके से मैं इसको इस तरह से मैंने इस तरह से देखा है कि ये मेरे लिए इंस्पिरेशन का एक तरीका है। और ये मुझे ये भी सिखाते हैं कि भाई हम टीचिंग्स को फॉर्मूला ना बना दें। तो अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है देन ट्राई एंड assess the situation of that person, his or her internal situation, the context, and then offer something. And of course to some extent जो वो औरों को टीचिंग्स दे रहे हैं जो इस किताब में है, कुछ हद तक मैं इनसे अपने लिए भी लेसन्स निकाल सकता हूँ। बट जब मैं अपने लिए लेसन्स निकालूँ देन आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरे सामने अजान चाह नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट कि हम उससे एक ब्लैंकेट कंक्लूजन ना ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल कि पटिज समुपाद के लिंक्स को समझना ज़रूरी नहीं है। एट द सेम टाइम क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लेक्स टीचिंग स्पेसिफिकली डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, it's much better understood through the specific description and help of a experienced teacher. So I would invite us all to see all of these teachings in that context. थैंक यू बंदे जी। राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जब वो टीचिंग्स जो दोहरा रहे थे, हम पहले भी कई बार मैंने कई जगह जाना है, पढ़ा भी है कि कई टीचर्स स्पिरिचुअल फील्ड में क्रोध बहुत आता है उन्हें। और ये यहाँ भी इस जगह हमने देखा कि वो एक अच्छी बात कर रहे थे, अचानक उनको बहुत क्रोध आ गया एक मॉन्क को देख करके, और क्या था उसका रीजन वो तो बताया नहीं, बट समहाउ ही गॉट एंग्री। एक तो ये बात थी, और दूसरा ये था कि व्हेन टू डिवोटीज वर वेरी कीन कि वो थोड़ा सा समय उन्हें दें, तो देयर वाज ही वाज वेरी एडमेंट अबाउट इट कि नहीं देना। तो एक वो भाव मन में, तो ये जो दो वो हैं, ये मुझे कई बार मैं इसके बारे में देखता हूँ, तो ये क्रोध जो आना और ये दूसरे की बात को कंपैशनेटली नहीं लेना, ये विरोधाभास लगता है कि हम जिस पाथ में हैं और
ठीक है, मैंने पढ़ा है कि बुद्धा को भी कई बार, भगवान बुद्ध को भी कई बार गुस्सा आता था। उनकी मैंने जो जीवनी पढ़ी है उसमें भी इसका जिक्र है, लेकिन शायद वो इतना भयंकर नहीं होता होगा जिस तरह से अजन चाह को गुस्सा बहुत, लुम्पो को बहुत ज्यादा आता था। और भी मैंने कई जगह देखा है। तो ये क्या टीचिंग्स के विरुद्ध नहीं है? शुड नॉट वी बी एज काम एज पॉसिबल इन एनी? आई थिंक राजेंद्र जी, जो बुक में आई थिंक कई जगह पे ये आता है कि जैसे शायद मैंने भी पढ़ा था अभी कि अजान चा यूज टू टेक ऑन दैट पर्सनैलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दो सिचुएशंस। सो आई थिंक उस सेक्शन में भी आई थिंक अगर हम उस ध्यान से पढ़ें वो गुस्से वाली बात को, उसमें ये भी आया था कि जब उन्होंने वो गुस्सा करा तो इट अपीयर्ड दैट के वो सामने वाले किसी मॉन्क को अपने अंदर गुस्सा पैदा कर रहे हैं, बट इट वाज हिज वे ऑफ एडमॉनिशिंग दैट मॉन्क अबाउट जो पास्ट में उस मॉन्क ने गलती करी थी। और उस पूरे इंस्टेंस को अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ना उनकी बॉडी में कुछ स्ट्रेस हुआ, ना बॉडी में अ, अ, कुछ स्टिफनेस हुई। एंड अगर हम जनरली अपना पर्सनल देखें, जब भी हमें गुस्सा आता है तो सडनली ऐसा नहीं होता कि एक मोमेंट में गुस्सा कर रहे हैं और अगले मोमेंट में वी फील नॉर्मल। वी ऑलवेज टेक सम टाइम, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, सम टाइम टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन ऑफ एंगर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वॉज क्विक मोमेंट। So it was not the anger which Ajahn Chah demonstrated. It was the right tone of his voice he had adopted, give to that particular monk as a teaching, जहाँ तक मैंने समझा। और इस तरह के चीजें बुक में बहुत बार आती हैं कि बेस्ड ऑन द सिचुएशन ही रिस्पॉन्डेड इन सच ए वे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक नोट करा हुआ था कि someone came and asked for sprinkling of some holy water। तो अजान चा ने उनको बोला कि सॉरी, मेरे पास अभी गर्म पानी नहीं है। तो वो सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो गया कि मैं तो आपको होली वाटर स्प्रिंकल करने के लिए कह रहा हूँ, उसका गर्म पानी से क्या मतलब। तो उनका मतलब ये था कि आई वांट टू स्प्रिंकल सम बॉइलिंग वाटर ओवर यू सो दैट के जो डिफाइलमेंट्स हैं, जब गर्म पानी बॉडी पे लगे तो छाला होगा तो डिफाइलमेंट्स को किक मिलेगी। दिस वाज हिज वे ऑफ कन्वेइंग दैट इट्स नॉट अबाउट द होली वाटर बट इट्स अबाउट द डिफाइलमेंट्स। बट इसी होली वाटर को लेके एक और पैसेज आता है कि जब ऑब्जर्वेंस डे पे विलेजर्स आते थे तो अजानचा उनको पहले कुछ वाटर स्प्रिंकल करते थे। एंड आई थिंक सम वेस्टर्न मॉन्क वाज वेरी सरप्राइज के अजानचा इज डूइंग दैट पर्टिकुलर superstition of sprinkling the holy water। But what he observed next was that कि after उन्होंने villagers को वो holy water sprinkle कर the villagers were satisfied and they were sitting in a pleasant mood। Then Ajahn gave them the talk on the teachings of Buddha and the teaching of five precepts, so that कि जो lay followers हैं वो teaching को right mood में accept कर पाए। So then it becomes that कि किस सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है ताकि सामने वाले को वो मैसेज कन्वे हो जाए। दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग एंड दैट वाज प्रॉब्ली द greatness of teachings of Ajahn Chah, to be able to allow people to reflect on their mistakes and correct them, कि स्पून फीडिंग ना करके लोगों को
आईना दिखाएं कि वो अपनी गलती को देख पाए। इस पे सोनल जी भी कमेंट में कह रही हैं कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब हम किसी स्टूडेंट को कुछ काम देते हैं तो हम स्ट्रिक्ट होते हैं कि उन्होंने कंप्लीट अगर नहीं किया तो, लेकिन अंदर कोई एंगर नहीं होता। बच्चों को कई बार समझाने के लिए ऊपर से गुस्सा करते हैं, तो इट माइट जस्ट बी समथिंग लाइक दैट। इट डजंट मीन द वन इज कमिंग फ्रॉम एन अनकम्पैशनेट प्लेस। इसके अलावा सोनल जी का एक सवाल भी है कि जो अजान शाह अपना घर छोड़कर आ गए थे बिना मतलब इन्होंने, सॉरी, ये जो अभी यहाँ पे शायद जो रीडिंग करी उसके अंदर कि वो हाउस होल्डर का घर छोड़ के आ गए विदाउट इन्फॉर्मिंग, हाउ कुड दिस बी इंटरप्रेटेड इन जनरल? इन्फॉर्मिंग अबाउट लीविंग वुड रिफ्लेक्ट कंपैशन। तो आई थिंक उसको अ, अ, मतलब कहीं पे भी उसमें ये एग्रीमेंट नहीं था कि whenever a particular monk is accepting to stay here कि कितने टाइम तक एक पर्टिकुलर मॉन्क स्टे करेगा या so I think the closest I can answer this question is that के uh, I had once read the teachings of विवेकानंद एंड उसमें भी यही सेम दृष्टांत आता है कि विवेकानंद यूज टू टेल कि अगर आप किसी के घर किसी ने आपको इनवाइट करा है और किसी के घर आप रह रहे हो, जहाँ पे भी आपको लगे कि नाउ थोड़ा सा बंधन बन रहा है कि सामने वाला बंदा ज्यादा ही स्नेह दिखा रहा है एंड देयर इज ए मोमेंट के देयर कैन बी अटैचमेंट कमिंग, so you let go of situation and you move out of that place and go to different place. So I think it was just uh, practicality which he followed ke there's no need to be attached to a particular situation or a particular place. If you see that there is no need uh, to stay any longer, then you move on. थैंक यू। कोई और फर्दर क्वेश्चंस हैं? मेरा एक क्वेश्चन है। यस। लास्ट वाला पार्ट जो आपने पढ़ा था दीपक जी ने, सो उसमें माइंडफुलनेस के बारे में कुछ बात हुई थी। इफ वी कैन टॉक मोर अबाउट इट, थोड़ी क्लैरिटी आई वाज सीकिंग फॉर, जो वो थोड़ा समझ नहीं आया था। उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देंगे ताकि हम जो उसमें शायद ये कहा गया था कि अजान शाह का कहना था कि आपके पास कोई भी एक्टिविटी आप कुछ कर रहे हो, अगर आप माइंडफुल नहीं हो तो वहां पे स्टॉप हो जाओ, कुछ ऐसा था लास्ट में जो सबने सबसे आपने पढ़ा। right, right. See, I think uh, see see one thing, ये इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट था वो विनय की टीचिंग्स से आता है। तो विनय की टीचिंग्स में जैसे कि मैंने बताया कि देयर इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ रूल्स कि मॉन्क को क्या फॉलो करना है और मॉन्क को क्या फॉलो नहीं करना है। एंड मैनी टाइम्स अगर एक पर्टिकुलर मॉन्क एक ऐसी सिचुएशन में होता है और उनको मॉन्क को नहीं पता कि व्हाट इज द राइट वे टू बिहेव, then it is better to stop and be alert in the present situation and then see and basically then let your mindfulness guide. तो वहाँ पे जो आई थिंक एक पर्टिकुलर बात जो नहीं आई थी वो शायद ऊपर वाले सेक्शन से लिंक थी कि इज अ थिंग ऑफ हीरी एंड ओतपा, मोरल फियर एंड मोरल ड्रेड के ना हम ऐसा काम करें जो कि सामने वाले बंदे के लिए गलत हो, ना हम कोई ऐसा काम करें जिसे हमें करने में
खुद शर्म आए. So then when you have mindfulness, when you stop and you collect in mindfulness, then you can reflect कि जो भी आपका सामने वाला जो एक्शन आप करना चाहते हो उसकी इंटेंशन क्या है, क्या उसमें कुछ किसी का हार्म तो नहीं हो रहा, क्या कुछ ऑफेंस तो नहीं हो रहा. एंड देन दैट विल अलाउ यू टू take a appropriate decision on that occasion, and which we can also apply हम अपनी डेली लाइफ में. Maybe I can just quickly show उससे ऊपर वाले सेक्शन को मैं just quickly पढ़ देता हूँ. It is true that there are lot of observances, but in the essence there are few. If we were observances in terms of monastic rules, if you were to try to keep every single training rule mentioned in the book, it would certainly be difficult. But actually, the explanation of Sila is just that explanation, an exposition, one that describes the working of the human mind. Through training your mind to have a wise shame, hiri, and fear of consequences, you will be naturally possessed of restraint and care with regard to training rules. As a result, your desires will be reduced and your mindfulness will be stronger. Whether standing, walking, sitting, or lying down, your you will be intent on maintaining a complete, constant mindfulness, and vigilance will appear in mind. And अगर किसी situation में confusion है, then when you pause, then you again come back to the consequences like of the wise shame and fear of consequences to help you make a decision. That was the way to make a decision when you're not sure how to respond in a situation. थैंक यू. Bhante ji, if I could ask you one question, आप अजान चा की मॉनेस्ट्री में ऑर्डेन हुए हैं, उस भिक्षु संघ के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है. सो what is it about Ajahn Chah that you have seen being practiced, as part of this particular sangha? How do we see Ajahn Chah come to life in the current times? या थैंक्स दीप्ति. और मैं उसको एड्रेस करूं उससे पहले एक चीज़ आई थिंक हम सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है, दैट हम जब स्टिलनेस फ्लोइंग पढ़ते हैं एक तरीके से वी आर ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट पीरियड जब अजान शाह प्रेजेंट हैं, एक्टिव हैं, और टीच कर रहे हैं. अब जो अनित्यता का प्रिंसिपल है वो वाटपापांग में भी लागू होता है, और things change over as we have now we see that we are 30 odd years after he passed away. In fact, practically speaking 1983 के बाद से उनकी एक फिजिकल प्रेजेंस रही 10 साल, लेकिन he was really not as a present figure, he was there. तो पर्सनली मेरे लिए मैं भी इसी तरीके से स्टिलनेस फ्लोइंग पढ़ के और उनकी कहानियाँ सुन के गया. मेरे लिए बहुत लाभदायक इनफैक्ट ये रहा कि जब मैं वहाँ जाता हूँ, गया रहा जब वहाँ, देन व्हेन आई रियलाइज कि भाई जो अनित्यता है वो वाटपापांग को भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि किसी और चीज़ को. तो अगर मेरे मन में धारणाएं थी कि चीज़ें ऐसी होंगी या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, और फिर जब उनको मैं वैसा नहीं पाता हूँ, जब मैंने उनको वैसा नहीं पाया, और उसके प्रति जब मेरे मन में अचंभा या रेजिस्टेंस जागी, या जैसे राजेंद्र जी कह रहे थे, ओ सो एंड सो शुड बिहेव सच एंड सच, एंड व्हेन आई सी दैट
that is not the case. It actually, I found कि वो जो एक साल था वहाँ, that was perhaps the richest for me. Not so much कि अजान चाह जो लेगेसी छोड़ गए हैं वो अभी कितनी मौजूद है, उससे मैंने क्या सीखा, बट रादर जो मेरे अपनी मन के कंस्ट्रक्शंस थे विद रिस्पेक्ट टू अजान चाह की मोनेस्ट्री में ऐसा होगा वैसा होगा एंड सो फोर्थ, जब वो चीज़ें उस तरह से नहीं थी, then actually to me that was actually the more the more helpful condition there, that permitted me to let go of a lot of those concepts, but more importantly then truly deepen this understanding of constant change, and also the fact कि वो भी एक संस्कृत चीज़ है, वाटपापोंग भी एक conditioned phenomena है, or it is subject to the same laws of nature. So that's perhaps a broader thing that I think is very helpful to remember. At least that was to me the most helpful thing. Specifically speaking, I think दीप्ति अभी भी जो विदिन द विनय रूल्स जो हमारे ट्रेडिशन की मोनेस्ट्रीज हैं उनमें कई सारे पॉइंट्स ऑफ एटिकेट, कई सारे स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, जो कि एक तरीके से बड़ी क्लियर एंड प्रेजेंट अजान चा की लेगेसी है, जिसको कि हम खोरवात कहते हैं, विच बेसिकली मीन्स practices within a monastery. So for example, the way we still um, sew our robes, जैसा यहाँ example आया, we all of us have done that, and dye our own robes, और इस तरह से बहुत सारी several points of nitty-gritty. So a lot of those practices are still alive. So I think a direct response to your question would really be that कि जो खोरवात हैं हमारे, वो अभी भी हम उनको फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो सारे पैसे रिलेटेड नियम हैं, दे आर रियली फॉलोड विद द सेम स्ट्रिक्टनेस दैट अजान शाह had uh, had uh, had insisted that we keep. So that would perhaps be the main legacy that still follow. The teachings, of course, you see, उनके जो disciples थे, अगर आप देखें, those disciples have grown in very very many different ways. हम अजान सोमेदो की बात करते हैं, जिस तरह से अजान सोमेदो चीज़ें बताते हैं, जिस तरह से लुम्पुर लियम बताते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क है. जिस तरह से अजय आनंद का टीचिंग स्टाइल है, और कुछ और थाई टीचर्स हैं उनके टीचिंग स्टाइल में काफ़ी काफ़ी फ़र्क है. सो इट्स ऑल्सो नॉट कि अजान चाह की कोई एक स्पेसिफिक टेक्निक है या कोई एक स्पेसिफिक पद्धति है, ऐसा नहीं है. एंड इन सम सेंसेस मैं ये समझता हूँ, एटलीस्ट मेरे लिए, दैट इज़ रियली द ग्रेटनेस, दैट इज़ रियली द रिचनेस, कि उनके जो डिसाइपल्स हैं उन्होंने अलग 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 तरीक़ों से वो ग्रो हुए हैं, और उनके जो टीचिंग स्टाइल्स हैं, वो जिस तरह से अपनी मोनेस्ट्रीज ऑर्गेनाइज करते हैं, वो काफ़ी अलग हैं. इनफैक्ट इवन वाटपा नाना चात और वाटपा पोंग के बीच में देर आर डिफरेंसेस. So in some senses, I consider that to be actually quite a strength of the tradition. Yeah, thank you. That helps in breaking some perceptions that we have कि चीजें कैसी होंगी. So in reality, things change also, and at the same time, tradition की कुछ चीजें हैं जो अभी continue हो रही हैं, which is great to hear. So with that, अगर कोई final question या comment है Can I तो ask a question, please? yes, go ahead, please. It's not related to the practice, but I had started reading Stillness Flowing, and I had a question, and I'm taking the advantage of the group here if somebody here knows. मुझे बहुत curiosity हुई है देख के कि they actually waited for 1 year to cremate his body, and they did not go in for any modern ways to preserve the body, but very traditional way of using Chinese tea and lemon and lot of quantity of all that stuff. So I was wondering, there must be a reason for waiting for 1 year to cremate his body. Is anybody aware of that reason? It's a very common practice in Thailand कि अगर कोई भी ऐसा
मशहूर व्यक्ति गुजर जाता है, आई मीन फॉर एग्जांपल द लास्ट किंग वाज आई थिंक केप्ट फॉर सिमिलरली अ ईयर और मोर, so it's fairly common. हमारे और senior monks, when they have passed away, they haven't been kept for a year, but certainly some have been kept for a few weeks to a few months. So it's not so uncommon. So basically, उसमें idea यही है कि वो एक मौका है for people to come and pay respects. That was the basic. Okay, thank you. And I'm also asking because is there any other occult reason in the sense there are some Hindus, there are reasons for why in the old days Hindus used to say that don't cremate the body before a certain period of time because uh, the Jivatma is taking a certain time to kind of disconnect with the body. And if you burn it too quickly, it is too violent and sudden a separation. Of course, in the case of Ajahn Chah's, that will not be probably a valid reason. But could that also be a reason in Buddhist practices? I mean, एक चीज तो ये समझना जरूरी है ना कि कोई एक होमोजेनस एंटिटी नहीं है कॉल्ड बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस। थाईलैंड की बहुत सारी, और थाईलैंड भी कहना एक तरीके से मेरे मेरे हिसाब से बहुत उचित नहीं है, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड का इलाका है, जो ये उबॉन है, उडॉन है, ये जो प्रोविंसेस हैं कल्चरली, ये असल में एथनिकली दे आर लाओशियन एक्चुअली। तो इनमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो लोकली चलती आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके इन सब प्रैक्टिसेस का जो बेसिस है वो त्रिपिटका में या भगवान बुद्ध की टीचिंग्स में हो। एंड इट्स जस्ट एंडलेस कितनी लोकल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो अराउंड डेथ बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं, but typically cremation is done either the same day or the next day. It's more or less the same as how it happens here. But certainly in terms of the other world and spirits, there are just innumerable beliefs and stories and so on and so forth. So that's as much as I would say. Okay, thank you. So I think one small point also, I think Lungpur Veer Dhammoki, I think if I remember his name correctly, उन्होंने शायद एक बार बताया था कि फॉर एग्जांपल व्हेन his mother was very old, he was taking care of his mother and probably staying for many years with his mother. And when his mother died, then I think for a few days he let the body stay in the house of his mother, and then he used that for meditation and reflection. That eventually this is what happens to us, that whosoever is born and whosoever is uh, born has to die. And then I think that also becomes a way to teach ourselves to uh, come out of this fear of death and take it more as a natural course, that birth and death are connected. Once you're born, there is a time when one has to die. So really that also becomes a way to come out of those attachments towards the life, not in negative sense, but more in terms of uh, seeing it more as a natural thing rather than something a natural law, or be okay with when it has to come, it has to come. थैंक यू। एंड ऑन दैट नोट अब हम कुछ चैंटिंग्स करेंगे, स्पेशली स्टार्टिंग विद विपश्यना भूमि पाठ, जो लुंगपुर चाह की एक फेवरेट चैंट थी। सो आई जस्ट इनवाइट या बंते जी, यू वांट टू से Yeah, so I'll just share कि जब अजान चाह करीब 9-10 साल बीमार थे और उस हॉस्पिटल कुटी में थे, जो हम लोग कई लोगों ने विजिट की है, तो उसके लॉन्स में अक्सर ये वाली चैंट की जाती थी जो अब हम करने वाले हैं. So I thought it's quite appropriate to basically do his favorite chant on this occasion, as we respect and honor the great teacher.
विपश्यना भूमि पाठ हो, पाली भाषा में करेंगे। पंचखंडा रूपखंडो वेदनाखंडो संज्ञाखंडो संखारखंडो विज्ञानखंडो द्वादश आयतनानि चक्षु आयतनं रूप आयतनं सोत आयतनं सद्ध आयतनं घ्राणायतनं गंध आयतनं जिह्वा आयतनं रस आयतनं काय आयतनं पोटभ आयतनं मन आयतनं धम्म आयतनं अठारस धातुयो चक्षु धातु रूप धातु चक्षु विज्ञान धातु सोत धातु सद्द धातु सोत विज्ञान धातु घ्राण धातु गंध धातु घ्राण विज्ञान धातु जिह्वा धातु रस धातु जिह्वा विज्ञान धातु काय धातु ओटब्ब धातु काय विज्ञान धातु मनो धातु धम्म धातु मनोविज्ञान धातु वाविशत इंद्रियाणि चक्षु इंद्रियं श्रोत इंद्रियं घ्राण इंद्रियं जिह्वा इंद्रियं काय इंद्रियं मन इंद्रियं इत्थ इंद्रियं पुरुष इंद्रियं जीवित इंद्रियं सुख इंद्रियं दुख इंद्रियं सोमनस्य इंद्रियं दोमनस्य इंद्रियं उपेक्ख इंद्रियं सद्ध इंद्रियं वीर्य इंद्रियं सत इंद्रियं समाध इंद्रियं पञ्ञा इंद्रियं अनन्यान अनन्यायतं अन्यस्मातीत इंद्रियं अन्य इंद्रियं अन्यताव इंद्रियं चत्तारि अर्य सच्चानि दुःखं अर्य सत्यं दुःख समुदय अर्य सत्यं दुःख निरोधो अर्य सत्यं दुःख निरोध गामिनी पटिपदा अर्य सत्यं अटिच्च समुप्पाद अविद्या पच्चया संखारा संखार पच्चया विज्ञानं विज्ञान पच्चया नाम रूपं नाम रूप पच्चया सदायतन सदायतन पच्चया फस्सो फस्स पच्चया वेदना वेदना पच्चया तन्हा तन्हा पच्चया उपादान उपादान पच्चया भवो भव पच्चया जाति जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्य उपायासा संभवन्ति एवं एतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य समुदयो होति अविद्याय त्वा एव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो संखार निरोधा विज्ञान निरोधो विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो नाम रूप निरोधा षडायतन निरोधो षडायतन निरोधा फस्स निरोधो फस्स निरोधा वेदना निरोधो वेदना निरोधा तण्हा निरोधो तण्हा निरोधा उपादान निरोधो उपादान निरोधा भव निरोधो भव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्य उपायासा निरुच्छन्ति एवं एतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य निरोधो होति। तो समापन के लिए
समापन चैंट्स एंड फाइनल रिमार्क्स के लिए बंटी जी से निवेदन। Okay, so हम आज का ये जो ऑस्पिशियस पावन दिन है इसको ऑब्जर्व करते हैं एंड वी कैन कीप इन आवर माइंड्स अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द ग्रेट लाइन ऑफ टीचर्स जिसके कि अजान चा एक पार्ट थे और जिसके वजह से फॉर मेनी ऑफ अस देयर हैव बीन openings to walking the path to Dhamma. And more importantly, जैसा कि मैं समझता हूँ Ajahn Chah would truly appreciate and truly consider it gratitude that we make strong aspirations, make a strong determination कि जो requisite energy है, जो एक requisite वीर्य है, वो हम अपनी साधना में, वो हम अपनी practice में लगाएं. And perhaps the best tribute to him would be to today, in this moment, as we close this session, make a determination, make an aspiration to continue or to begin, depending on where we are, our practice and walk the path with the energy that Ajahn Chah showed throughout his life and which still permeates and pervades the atmosphere in Wat Pah. So that might be the most appropriate tribute to Ajahn Chah as we close this day. So please join me in making such an aspiration and continuing to follow the wonderful teachings that he has left behind for us. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada suthi bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada suthi bhavantu te bhavatu sabba mangalang Rakhantu sabdevata sabsanghanubhavena sada soti bhavantu te. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhivademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namam. And also maybe convey gratitude to Deepak and everybody else who's put the session together today. आए बनते को भी हम 3 बार नमन करें. नमन, नमन, नमन. Thank you, Bhante ji, for your guidance and your inputs in this session. Thank you, Deepak. Thank you. Thank you very much. Thank you. Pranam. Namaskar. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Good night. Shubhatri.